Now, after 17 days ordeal, trapped rescue workers are finally out. Just shortly after 7:30 last evening, trapped workers started coming out. They were pulled out one by one, and within 1 hour, 41 of those trapped workers were out. The Chief Minister of the state, Pushkar Singh Dhami, as well as Union Minister VK Singh, were at the tunnel to welcome the rescued workers. And after high-tech machines such as auger machines that failed to drill through the nearly 60 meters of rock that had in fact threatened to bury the workers, it was the rat hole miners, the technique that was successful, a technique that's been illegal now, something because of the dangers and the risks involved. It's a very primitive method that was adopted. The workers were brought out on specially modified stretchers, and the Chief Minister was at the spot hugging the workers as they came out. The personnel from the NDRF had gone down the pipe first to assess the condition of the trapped men and guide them through the rescue protocols. Each worker was strapped to the stretcher that was then manually pulled up through 60 meters of rock and debris. The rescued workers are now at the medical center, which is about 30 kilometers from that tunnel that collapsed, and they'll be kept there for 24 hours under observation. While the families, they've been rejoicing across different parts of the country. Sweets were distributed outside the tunnel. We saw a lot of celebration, a lot of joy and cheer amongst the family members, and of course many people at large, in fact, who are definitely celebrating the return of the workers. We have our reporters joining us. We have Nukul joining us from the district hospital in Chinnasoli. We also have Saurabh Gupta joining us from the residence of Jaydev Pramanik, one of the trapped workers who's now finally out and is at that hospital. We have Kishore Rawat, my colleague who's been reporting from the tunnel site all through the 17 days, joining us from that very site again. Let me first go across to Nukul, ask him, Nukul, what is the situation like? How long did it take for the workers to be transported from the tunnel to the hospital? The stretch we do know is about 30 kilometers. How long did it take for those 41 ambulances to reach the hospital? Well, Divya, we are outside the medical facility in Chinyali Sod, and what we can tell you is that the 41 trapped rescued workers who were brought here last night, they are kept in a 24-hour medical observation. Last night, Chief Minister Pushkar Singh Dhami had also stated that they will take further action after the recommendation of the doctor. Let me just show you this particular medical facility which is there in Chinyali Sod. Now, being trapped, in a closed space with no sunlight and fresh air, the 41 rescued from the under construction Silkyara tunnel are being kept for this 24-hour medical observation, as I was telling you. Now, there are 41 beds which has been established in this particular medical facility. This is a community center indeed, which was converted into a COVID facility during the COVID time. There's now a special ward which has been established here, in which 41 beds have also been established, and 41 workers are also kept inside this. Now, yesterday the workers were transported through the ambulances in batches of 5 to this medical facility last night, and at the same time what we are also hearing that Chief Minister of Uttarakhand Pushkar Singh Dhami is likely to visit in this medical facility. Last night they also spoke to the Prime Minister on the phone line. The Prime Minister spoke to these rescued workers. Chief Minister of Uttarakhand Pushkar Singh Dhami also announced that rupees 1 lakh aid will be provided to each worker and safely transported to their home. So now what we are also getting from our sources that in AIMS Rishikesh, the doctors are also bracing themselves for any sort of condition after they being these workers being assessed in this medical facility for observation. Divya. Right, Nukul, we'll come back to you. Let's just cut across to Kishore as well, who's joining us from the tunnel side. किशोर, ये बताइए जो लोग बाहर आए 41 वर्कर्स, 1 घंटे की टाइम फ्रेम में they managed to get them out. A huge round of applause for the rat hole miners who worked at that breakneck speed. 24 घंटों में उन्होंने कहा था, आपको ही बोला था कि 24 घंटे के अंदर हम उनको बाहर ले आएंगे. 24 घंटे में वो उन्होंने अपना काम कर दिया, और वो टाइम जो उन्होंने लेना था उनको बाहर लाने में भी, उसमें भी बहुत ही उन्होंने जल्दी सबको बाहर भी ले आए. दे वर ट्रांसपोर्टेड. अगर आपके पास कोई अपडेट है, if everything has carried on, like we can see that they've been taken to the hospital, what is the course of action from here on?
बिल्कुल, जिस तरीके से 17 दिन की एक जंग चली जिसमें उन लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो आखिरी के क्षण थे जिसमें जो ऑगर मशीन का ब्लेड और ऑगर का हेड फंस गया था, उसके बाद जो रेड होल माइनर थे, उनने जो कहा था, जो अंदर वो जब हमारी बातचीत हुई थी और अंदर कह के गए थे कि हम 24 घंटे के अंदर उनको निकाल के ले आएंगे और हम आ जाए, तो उन्होंने वो काम किया और हमारी बातचीत हुई तो इस बात से खुश थे। उन्होंने कहा कि कम से कम इस बात की खुशी है कि हमने 41 लोगों की जिंदगी बचाई है। काम हमने बहुत सारे किए थे लेकिन आज जो खुशी है वो ज्यादा मिली है। अपडेट के तौर पर फिलहाल तो टनल साइट में अभी किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी कर दी गई है। इसके अलावा जहाँ हॉस्पिटल है वहां पर भी रात भर डॉक्टर उनका इलाज करते रहे। जिस तरीके से डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि इनकी सेहत अच्छी है। जैसा लग रहा था कि 17 दिन तक इनको कमजोरी आ सकती है या कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन खाना पानी और जिस तरीके से ये अंदर लगातार अपने शरीर को ठीक रखते गए और मानसिक तौर पर मजबूत होते रहे, इसलिए इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनको सभी को जो अंदर फंसे थे उनको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इनको घर जाने का पूरा प्रबंध किया है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल चिलियानी रिसोर्ट में इन सब का इलाज किया जा रहा है और देखना होगा कि डॉक्टर्स की सलाह के बाद इनको कब निकाला जाता है। फिलहाल अभी जो इस पूरे जो घटनाक्रम घटा था, जो पूरे इसमें मामले में थे, फिलहाल एक जो 17 दिन की एक सफलता मिली है 17 दिन बाद और 17 दिन की मेहनत के बाद, तो उसको लेकर अभी फिलहाल सभी यहाँ पर निश्चिंत हैं। अक्सर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती थी, सुबह लगातार इसी बात की चर्चा होती थी कि कब निकलेंगे। अब सारी चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो गया है और अब फिलहाल उन लोगों को घर जाने की उनकी तैयारी चल रही है। किशोर, जैसे आपने कहा 17 दिन से वो फंसे हुए थे, दे हैडंट सीन सनलाइट फॉर 17 डेज। पिछले 2-3 दिनों में उनको विटामिन डी दे रहे थे, विटामिन सी दे रहे थे, और क्या चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे थे। यू नो, वी डिड सी एंड हियर अबाउट द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो 3 बार फंस चुके हैं ऐसी सिचुएशन में। उन्होंने कहा मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन टू कम आउट। उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से 41 लोगों में एक गब्बर सिंह नेगी जो कि सुपरवाइजर थे, जो सबसे ज्यादा सीनियर और उससे पहले वो एक्स आर्मी पर्सन थे। इसके अलावा सबा अहमद, 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने लगातार उन सभी लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों को इस बात के लिए मजबूत किया कि हम निकलेंगे यहाँ से और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीमें हैं वो हमारी मदद करने पहुंच रही है। ये एक मेंटली तौर पर उनको मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ी बात थी, वो रखना बेहद जरूरी था। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि जिस तरीके से 17 दिन तक काम हुआ, उनको खाने पीने के लगातार पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक इनको खाना पीना प्रोवाइड किया गया, लेकिन इनको ड्राई फ्रूट्स, चने, भुने हुए चने, इसके अलावा उबले हुए चने, मूंगफलियां ये दी जा रही थी। जिनको अगर कोई दिक्कत थी तो छोटे पाइप से दी जा रही थी। उसके बाद जब 9वें दिन में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है और 57 मीटर के जो मलबे को चीरते हुए 53 मीटर की पाइप, उसके बाद फिर उसको पाइप को आगे 57 मीटर तक किया जाता है। 6 इंच का पाइप था, उससे दलिया, उसके बाद खिचड़ी और उनके कपड़े, तो बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड की गई जो उनको कम से कम चीजें खाने को मिली और वो मजबूत रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच किशोर हमारे को वो जानकारी देने के लिए। सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जॉइनिंग अस फ्रॉम हुगली, द फैमिली ऑफ सोविक Pakira, the rescued worker. Saurabh, take us through the mood of the family and that sigh of relief. You know, how have they been celebrating overnight? Well, you know, these are village folk, and for them, a celebration was simple. It was a visit to the village temple next door, and it's back to life as usual. These are families who need to make their livelihoods, and therefore, you know, they're leaving for the fields, offering, you know, puja in the morning. If you just look at this place, it's an extremely rural setup, you know, and these are young men from rural backgrounds who are primarily their families are engaged in farming and agriculture. So obviously, it's back to normal. You know, it's no celebration of the sort, but obviously a huge relief for these families, because these young men were also breadwinners, and their safety, their security, apart from the fact that their loved ones also mattered a lot in terms of their well-being. And therefore you can see, you know, there is at this point families, you know, going about their lives as usual. Nobody really in this moment, you know, sort of overtly
celebrating anything of the sort. Village life is very different. People have to go about their jobs, and that's what they're doing. Given that Shobik Pahira has been rescued now, it's back to normal for these families.